मुहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला जा बहुत वड़ा एहसान आहिनि पा बदे मथे ने ख़ास करीने कौम मेमन मथे कि अल्लाह तबारक व तआला कौम मेमन के ईमान जी दौलत नसीब करी तो भी इंजा महबूब बंदा गौसे आज़म जे औलाद जे ज़रिए नसीब करी। ये वाक़ियो किन रीते थियो वो पा बदे के ख़बर है कि इफ़ यू रिफर टू द हिस्ट्री अज से लगभग 700-800 वर पिल्ला पंहिंजा जो पे ॾाॾा हुआ ए सिंध में रहना हुआ। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जे औलाद में से अकरा बुजुर्ग गालिबन सैयद यूसुफुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैहि वा ए जडे आविया ते नारिया के ये मेमन कौम अकरी जगह ते समंद नदी कोरा वेठा हुआ उभा हुआ बदे। दे वर स्टैंडिंग बिसाइड्स अ रिवर एंड द पर्पस वाज टू क्रॉस द रिवर इन ऑर्डर टू वर्शिप द आइडल। बुत परस्ती लई करे ने पांजा पे ॾाॾा उन टेम ते अकरी बोट जी वाट ना हो, स्टीमर जी वाट ना हो, करे लाइक विन लाइक रस्तो ना हो। जरे बोट अचे तो ओडा कोरा विन ने मंदिर में विने पूजा कर। तो सरकार गौसे पाक जी औलाद में से अकरा जो बुजुर्ग हुआ इन पर पोतरे में सी ए आविया पूछया कहीं कुड़ा किडा करे ले उभायो। सो दोस पीपल सेड वी आर वेटिंग फॉर द बोट फॉर अस टू गो देयर एंड वर्शिप द आइडल्स। तो सरकार गौसे पाक जी औलाद फरमाइन था कि व्हाई डू यू वर्शिप द आइडल्स, वी शुड वर्शिप अल्लाह ताला हु इज द क्रिएटर। उन्हें के अकरी समझ दिल लाइ अकरो इम्तिहान गिन लाइ ने अकरो तौट अकरो दिल लाइ के गौसे पाक जी औलाद फरमाइन था कि अकरो कम करो आई बोट जी वाट ना रोता ताकि आई उड़ा विन ने पूजा करो। अगर आऊं वो मंदिर के डांजे सामने रखी दिया तो मकसद ही ना हो कि मंदिर में आई पूजा करो, नो उन्हें जो वीकनेस के देखर लाइ कि जिन जी आई पूजा करो था वो असांजे कब्जे में आहिनि, असांजे इख्तियार में आहिनि। इफ वी वांट वी कैन ब्रिंग दोस हियर। तो चो कि तो बहुत वही गाल थी वही अगर ये मंदिर एडा अची वने तो वो सरकार रदी अल्लाह ताला अन्हु बस अल्लाह जी दिनेली आतासी ने जो इख्तियार के यूज़ करिया नारिया तो मंदिर एडा अची वी तो इनके आसान थी पूजा कर लाई। पन ए बुजुर्ग फरमाया नारिया जिन जी आई पूजा करो था ना उन्हें में कोई ताकत आए ना, असा चाहूँ तो एडा सुडा हटाई था विजू इनके। वाई नॉट यू वर्शिप द लॉर्ड हु इज माई क्रिएटर, योर क्रिएटर, द क्रिएटर फॉर द एंटायर क्रिएशन। वो मारू जे मगज में घाल वही रही ने इस्लाम कबूल करी गिरी। इस्लाम कबूल करने के बाद जाहिर है हर जगह ते ही थे तो कि मारू जडे मुसलमान थीन था तो अमुक जना दुश्मनी करन था, इनके सताइन था, टॉर्चर्स करन था। तो वो पांजे पे ॾाॾे के भी सताइन में आवियो। नाउ दे केम अगेन टू दिस बुजुर्ग कि हुजूर असां के तकलीफ़ है, असां के सताइन में अची रही है, आई कि असांजी खिदमत असांजी मदद करो। तो इन्हें चो ठीक है आई को कम करो, आई हिजरत करी वनो, माइग्रेट करी वनो। तो वो पांजा पे ॾाॾा पछे उदासी माइग्रेट करनो शुरू करी दी ने। इन दरमियान में अकरी एग्रीमेंट भी थी हुई। वो एग्रीमेंट अकरी जगह ते छापानो हो ने मुझे वटे उनकी अकरी कॉपी भी आई, अकरे आर्टिकल में आवी हो, आई हैव दैट कॉपी एज वेल। उनमें लिखेलो है कि ए सरकार असां के अल्लाह ताला आइन जे जरिए ईमान नसीब करिए। आई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी औलाद में से हो ने पछे गौसे पाक जे सिलसिले से भी अचो तो हुजूर गौस पाक भी पांजे नबी जी आल में से ने गौस पाक जी औलाद में से आई हो। तो असा कौम मेमन जा जो वडीलियों जो लीडर्स यूं वी प्लेज विथ यू, असा आइन से एकरो वादो करूं था, अहद करूं था कि असा या असां जी औलाद औलाद जी औलाद क़यामत सुदनी until qiyamah all of our offspring will have to love and obey the followers of Ghawsul Azam radiyallahu ta'ala ने असन जी कौम में से अगर क़यामत सुदनी कोई भी गौसे पाक जो खिलाफ उन्नी तो असन के मेमन कौम से हटाई था वजू करें। वो असन जी कौम में से जिन्हें जो गौसे पाक के ना मंजे, जो गौसे पाक जो अदब ना करे, कहीं ना करे एग्रीमेंट करी आवा। अल्लाह अकबर ने साथ साथ त्रे चीज़ें जी फरमाइश भी करी आवा। उकरो वो जरो पा मशहूर है पा सुनिया था करूँ कि चुआ के अल्लाह जी बारगाह से असा के त्रे चीज़ों अता करे दियो, इज्जत, दौलत, खूबसूरती। अल्लाह जा बहु वॾा करम आहिनि। ऐं पोते सॼी दुनिया घणी जगह फिरूं या अल्हम्दुलिल्लाह जिड़ा जिड़ा मेमन के नारी आयूं इल्ला माशाअल्लाह मोस्ट ऑफ द टाइम अल्लाह ताला इन्हें के इतनी खूबसूरती से नवाजी है, इज्जत भी इतनी जी नवाजी है ने दौलत भी अल्लाह इतरो नवाजी है। तो ये चीज़ कें जे ज़रिए मेरी दीनी अल्लाह सादात किराम के जरिए से मिली है, गौसे पाक की औलाद के जरिए से मिली है। एंड दिस इज द रीजन वी फाइंड एवरीवेयर पीपल कमेमोरेट 11वीं शरीफ बट मेमन्स दे आर फ्रंट इन इट। बी कौम भी करन था इन्हें के नथा करन बट मेमन कौम में खास करने सरकार गौसे पाक जो तस्करो थी रही है कुरे लाई उन्हें जे जरिए ईमान जी दौलत नसीब थी है। एंड देयर इज अ विजडम बिहाइंड दैट, देयर इज अ रीजन फॉर दिस। अगर कोई मारो तकलीफ में हुई ने अकरो जानो उनकी मदद करी दी बिजनेस लाई करी ने, he was in difficulty, a person came and helped him,
हाँ ने वो जॾहिं बिज़नेस में कामयाब थी वियो त हमेशा यादि करिणो कि अल्लाह जे मूंखे रोज़ी ॾिनी आहे, कामयाबी ॾिनी आहे, पण अल्लाह इन जे ज़रिए मुंहिंजी मदद करी. सो ही हैज़ टू बी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन. सिमिलरली हिकिड़ो ॼणो ड्रोन थी रहियो हो, दरिया में डुबाई रहियो हो, ने ॿियो हिकिड़ो ॼणो अची हथ ॾिने मदद करी, ॿार कढी गिरी. बचाइण वारो त अल्लाह जे, पण अल्लाह ई माण्हू जे ज़रिए उनजी मदद करी, उनखे बचाए. त उहो जॾहिं सुधनी दुनिया में रहियो, उनखे यादि त अचनो कि आख़िरी टेम 20 वर पहिला, 5 वर पहिला, 4 वर पहिला ऐं दरिया में डुबाई न हुअसि. अल्लाह ताला मूंखे इन जे ज़रिए मुंहिंजी मदद करी कनी. And he has to be grateful. Why? Mallam yashkurin nas lam yashkurillah. The person who is not grateful to the person who did favor, he is not grateful to Allah. जो बंदे जो शुक्र अदा नथो करे वो अल्लाह जो शुक्र अदा नथो करे. त ई बंदे जे शुक्र अदा करनो इन मथे ज़रूरी आहे. हाने माल दौलत जान सी वधीने हिकिड़ी चीज़ आहे, उकरू आहे ईमान. पंहिंजा बुज़ुर्ग पंहिंजे ईमान खे बचाया आहिनि. कुफर जी घाट से पांके अंधेरे से पांके उजाले ते खोटी आविया, पांके ईमान जी दौलत से नवाजिया. ईमान दीनी अल्लाह आई, पन ई गौसे पाक जी औलाद जे सदक़े में ॾिनी है. हेड़ी रीते पंहिंजा ॿिया बि बिरादरी जा माण्हू आहिनि, बधे के या तो कोई सहाबी जे ज़रिए, या कोई ताबई जे ज़रिए, या कोई वली जे ज़रिए, बधे औलिया जन कोई न कोई जे ज़रिए अल्लाह ताला इनके ईमान जी दौलत नसीब करिए. सो ईमान इज़ वर्दी देन द वेल्थ देन द लाइफ. त जॾहिं वर्ल्डली मैटर लाइ करे, माल लाइ ने जान लाइ करे पास शुक्र अदा करूं था, त जिन जे ज़रिए ईमान अल्लाह ॾिनी उन जो केतिरो शुक्र अदा करियो पे. सो इन ऑर्डर टू बी ग्रेटफुल वी डू 11वीं शरीफ़. In order to be grateful, we do छठी शरीफ. लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज के जरिए अकरबोना लगभग 90 लख जाना मुसलमान थिया. तो उन्हें जी औलाद लगभग कितना वर थिया, 800 वर थी ना गरीब नवाज के. तो 90 लख 9 मिलियन पीपल जब जनरेशन के 800 ईयर्स में डिवाइड करेगी ना, मतलब कैलकुलेशन करेगी नो. फॉर एग्जाम्पल माशाल्लाह बदे भनेला मारियो, अंडरस्टैंडिंग आई, बदे इंटेलेक्चुअल्स हो. हर 5 वर में अगर अकरो जनरेशन वधनो हुई तो 90 लख में अगर बिया 90 लख पैदा थी विया तो अकरो करोड़ ने 80 लख थिया 5 वर बाद. वो अकरो करोड़ 80 लख जब बिया जनरेशन वधी 5 वर बाद, बिया 90 लख वधिया तो 2 करोड़ 70 लख थिया. 100 वर जे अंदर 4 जनरेशन पा कैलकुलेशन करूं तो कितना करोड़ थी विया. 800 वर में अगेन 100 इंटू मल्टीप्लाई इंटू 8 तो 800 वर अंदर कितना मिलियंस ऑफ जनरेशन अची विया. गरीब नवाज के जरिए 90 लख जाना मुसलमान थिया ने. हदीस में अचे तो अगर आइन के जरिए अकरे के हिदायत मिले तो उनकी सजी जिंदगी जो सवाब आंके मिले तो. हदीस की रोशनी होल लाइफ में जितनी भी नेकी करी उनजो सवाब मिलनो ने. वो इनकी फैमिली के मुसलमान करी तो सजी फैमिली जो सवाब इनके मिलनो, बदेन जो सवाब करन वारे के मिलनो. वो उनकी औलाद के मुसलमान करी, बदेन जो सवाब इनके मिलनो. गरीब नवाज 800 पहला 90 लख जाने के मुसलमान करिया. वो 90 लख जी जनरेशन अपन जनरेशन अज सुधनी कितना करोड़ मुसलमान थी विया. ये बदेन जो सवाब गरीब नवाज के अल्लाह पुजाई रही है. तो सजी जिंदगी पर जितरो भी अमल करूं थे पांजा दर्जा जितरो वधन था एतरो गरीब नवाज जो दर्जा मल्टीप्लिकेशन में एक्यूमुलेट थिया था करन. मतलब करो थियो पा जितरो अग्या वधने उनसी करोड़ दर्जा मथे गरीब नवाज जो दर्जा बुलंद थिन था. दस वी कैनॉट रीच द स्टेटस ऑफ गरीब नवाज. जडे गरीब नवाज जो स्टेटस ते पुजी नथा सिगो, गौसे आजम जो स्टेटस से केर पुजी सके तो, सहाबा जो स्टेटस ते केर पुजी सके तो, नबी जो स्टेटस ते केर पुजी सके तो, ने नबी जो सरदार जी तो बराबरी कोई तस्वुर जो नथो करी सके. तो पांजी 11वीं करनो, छठी करनो, ई चीज जी दलील है कि वी आर बीइंग ग्रेटफुल टू दोस पीपल बिकॉज वी आर Muslims today by the sacrifices of those people, and this is the reason. आई कोई भी जगह ते नारी गिनो सहाबा करम जी जमात इंडिया में आवी आई, पाकिस्तान में भी आई, श्रीलंका में सहाबा करम जी मज़ार हुआ, सजी दुनिया विया, चाइना में सहाबा जी मज़ार आहिनि. हर जगह ते इस्लाम के प्रोपोगेट कर लाई विया. ई बुजुर्गन जी वजह से पांके इस्लाम जी दौलत नसीब थी है. त अल्हम्दुलिल्लाह पा मुसलमान यूं मुसलमान घर में पैदा थिया हूं. ई बुजुर्गन जा करम आहिनि. व्हाट हैव वी डन फॉर द सेक ऑफ इस्लाम? We are Muslims, alhamdulillah, but what have we done to protect our iman? Today, our youths are getting deviated by referring to the internet mullahs, by referring to those scholars who follow the teachings of Wahhabism, Najdism, Deobandism, Qadianism, Shiaism. What are we doing for the protection of our youth? For us to do, first of all, we should be educated. Panke wo cheez samajh khape. Panke aqido khabar nahi, panke iman bachal lai khabar nahi. We have not learned the proper aqidah. Without learning, how are we going to protect the aqidah, the belief of our youth? So this is the time that we should realize the importance of the aqidah in order to protect our iman and the iman of our youths. And at the same time, alhamdulillah, pa har jagah te kamyabi Allah ji ata si, har jagah te panji izzat ai, badhe ki ai. But what we have done in return,
पंहिंजे छोकिरे खे पाण मोकिलनि त भन लाइ कोई कैनेडा वियो, कोई ऑस्ट्रेलिया वियो, कोई जापान वियो, कोई USA वियो, कोई UK वियो, हर जगह ते कोई मलेशिया वञे एजुकेशन गिने, तो हर जगह ते वेरनि था माण्हू, पा बोझ मेहनत करूं था। बट हैव वी एवर थॉट कि पा पंहिंजे बच्चे खे इंजीनियर बनाए ॾिने, डॉक्टर बनाए ॾिने, प्रोफेशनल बनाए ॾिने, हर की बनी वियो, पर वो बच्चे के ई खबर ने कि पे जो इंतकाल थे तो नमाज जनाजा किन पढ़ावे। What is the use? You have given such an education to your children. He is a professional, he is helping others, he is earning as well as supporting others, everything is done, but he is not in a position to conduct your janaza prayer. A father is deprived from being conducted his own janaza prayer by his own son. Why? We have not given that education. So the way you give the worldly education, it is utmost important upon us to give the religious education. This is must. Why? Because when a child is born, we are looking for a Maulana to give the azan. And when the janaza is occurred, we are looking for the Maulana to conduct the janaza. Everywhere we need, in order to conduct the nikah, we are looking for a scholar to conduct the nikah. Very good. You should respect, you should honor the ulama, but at the same time, the best person to conduct the janaza is his own son. But is he capable to do that? Unfortunately, no, rarely. Who are responsible? We. Because we have not given that education to them. And at the same time, you ask those children, who was the president of America 100 years ago? He may reply you instantly. You ask him about Hitler, the history of Hitler, he may respond you immediately. You ask him about another country, about South African president 50 years ago, who was ruling that? 50 years ago, who was ruling India and Pakistan? They will instantly reply you. They know history. But at the same time, you ask them, how long was the Khilafat period of Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu? Khabar nahi. Sochiyo kapun. Hazrat Farooq Azam ji hukumat kitra var thi? Ine je zamane mein Islam kin kin jagah te phailanu? To how extent Islam was spread during the time of Farooq Azam, Hazrat Usman Ghani, Hazrat Maula Ali Mushkil Kusha? Our children are unaware. Who was Imam Azam? We don't know. What was the state of Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad? Don't know. You know Imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu. He has done a great favor upon us. During his time, people started fabricating the hadith. So Hazrat Yahya bin Mu'in and Imam Ahmad ibn Hanbal, these two were the great scholars to differentiate between the Sahih hadith and the fabricated ones. And Imam Ahmad ibn Hanbal, he had memorized 1 million hadith. 2 lakh hadith inhe ke yaad bhi. Now Imam Bukhari radiyallahu anhu, 6 lakhs hadith. Imam Jalaluddin Suyuti, 5 lakhs hadith. Memorizing 6 lakhs hadith, he was following Imam Shafi'i. Memorizing 5 lakhs hadith, Imam Suyuti was following Imam Shafi'i. He bade vada buzurg itri hadith janan je baad de imamen ke follow karna ne aje do vi hadith ke yaad karne chunda sang ke imamen ji zarurat ne. Who are they? What are the rights they got to utter such? So unfortunately, because we didn't give that education about the history of Islam, who were our pious predecessors, our children are unaware. And at the same time, you ask them, how many farz are there in the salah? Nando wastade vachumus yad kariye khopun. Whereas it's a daily routine. How many conditions shart in your salah? Must think of it. I have studied long ago. How many farz are in their ghusl, which is utmost important. Jade ghusl farz thi vine, ta paki thi lekane ghusl ja farz jannu zaruri hai. Guri karnu. That is washing the mouth in such a manner that there should not remain anything like the meats and all. You should remove it, you should take it out, you should wash your mouth in such a manner that it should reach every part of your mouth, and you should gargle also. And the second first, you should raise water into your nose, naram haddi sudani, so that, and you should also clean the areas. If there are things, you should remove it because the water has to reach, second first. And the third first, you should wash your body in such a manner from head to toe. There should not remain a single part equivalent to a hair unwashed. Baal barabar bhi jagah ghusl una jo na bachiyo khape, yani har jagah te pani flow thinu bahainu zaruri hai. Donu alag hai, flow thinu alag hai. Flow jo matlab minimum in every part of the body 2 drops of water should flow.
This is the reason our ulama has given this ihtiyat कि आई वुजू करो, गुसल करो तो पहला पानी के विजय ने सारे सी बदन के मली गिनो, ताकि सेकंड टाइम पानी हो जाए तो आसानी से पानी हली उन्हें. The water will reach easily during the second time after you rub your body. So in this manner, taking precautions, we should do ghusl. If not, farz is not done. If farz is not done, how our prayer is going to be accepted? So our children, our youth are mostly unaware of the farais of ghusl, farais of wuzu, farais of namaz, wajib of namaz. How unfortunate is it if they say we don't know. And at the same time you ask about IT matter, instant reply. Any other matter, instant reply. My dear brothers, my dear elders, sincerely I'm not telling that you are doing that in general, because this is being recorded. In general, we find many youths are unaware, so it is utmost important for us to educate them with the beliefs of Islam, and at the same time those things which are fard upon us to conduct in a proper manner. अगर ये चीज़ पास सीखी विन्ने इंशाअल्लाह पांजी औलाद काल पाला करने इस्तिग़फ़ार करनी ईसाले सवाब करनी. अगर पाइने के सीखा यूनी, they will not know. After a father has gone, left this world, mother left this world, mar gaya mardud fatiha na darud. This is what is happening today. They do not regard them. असांजे श्रीलंका में तो एॾा सुधरी थिए थो कि भाई यासीन शरीफ आई पढ़ी ने ईसाले सवाब ना करो, फातिहो पढ़ी ने ईसाले सवाब ना करो, no need to do ईसाले सवाब, dead and gone, that's it. Whereas in light of the hadith we find that when you recite Surah Al-Fatiha, when you recite Yasin Sharif, when you recite the Holy Quran, when you do the dhikr, when you give sadaqah on their behalf, the rewards reaches them in form of mountains. And further, another hadith in Mishkat Sharif, Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam says in such a manner that akre bande ke Allah Ta'ala bakhshi dini, he's already got the salvation. But he saw that his status are being elevated. He's already got the salvation, bakhshish thi vinji. पर अल्लाह जा रसूल फरमाए था वो बंदो अल्लाह के पूछे तो कि या अल्लाह मिके तू बख्शी दी नहीं है, मुझे दर्जा बुलंद थी रही है निजी वजह करू है. तो अल्लाह जवाब दे तो कि ऐ मुझे बंदा तुझी औलाद तुझे लेकर मगफिरत जी दुआ करी रही है. Your children seeking forgiveness for you, for this reason your status are being elevated. Now what do we understand from this hadith? Even if the sins are forgiven, seeking forgiveness is a mean for the elevation of the status. Darja ji bulandi lekane karo zariyo hai. Now if you want the daraja of your parents, grandparents to be elevated, do istighfar every day, after every prayers. Very simple. Allahumma Rabbi ja'alni muqim as-salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, forgive me, forgive my parents, forgive the whole Muslimin. A small dua, Rabbi ghfirli, Ya Allah, forgive me, wa li walidayya, forgive my parents, wa lil mu'minin, and forgive all the believers. By doing this, inshallah, our sins will be forgiven. And if it is forgiven, status will be elevated. Sins of the parents will be forgiven. If it's already forgiven, their status will be elevated. So it is up to these people, if they want the statuses of their parents to be elevated after their death, they should do Isale Thawab. And if they don't want that to happen, their problem. We, the people of Ahlus Sunnah, we wanted to do this practice, and this is the reason we do Tija, we do Chaliswa. Why is that? Purpose is Kruai, Isale Thawab. Inike Sawab Pujain. Sawab Pujain si panke bhi Sawab mireto, inike bhi mireto. Just one hadith before I end. In light of the hadith of Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam, agar aayi koi ki khairat karo ta, samjho aayi akre khave jo parcel koi ke didi niya. Ya koi ke aayi $2 didi niya Canadian, you give $10 to a person, let him have his meal. So if you give, you will get the reward of one meal for yourself. But if you intend, Ya Allah, mujhe maa ji taraf se diyanto hai, mujhe pe ji taraf se diyanto hai. So if you intend for your parents, you will be rewarded, they both also will be rewarded. In light of the hadith. Ne mehman maru ta vepari hoy to na. In generally pa vepari maru yu. Ta panji koshish karo hoy to jeda vadhare faydo hoy upa naru na. तो आंकी किन में वधारे फायदो है, आंकी तरफ से सदको करनो वधारे फायदो है कि आंके माँ पे जे तरफ से भी सदको करो तो उनमें वधारे फायदो है ना. And similarly, if you intend for your grandparents, for your children, for your siblings, इन्हें जे तरफ से आंके करो ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उम्मत जी तरफ से करी दियो कि या अल्लाह इनके सवाब तू बदें के अता करी दे तो बदें के सवाब मिलनो आंके भी सवाब मिलनो. An easy example for this in light of the hadith which Imam Jalaluddin Suyuti radiyallahu anhu has recorded in his kitab Sharh as-Sudur,
that when a person visits the graveyard, passing by the graveyard, jade qabristan wate se nikle ne 11 feri suratul ikhlas pare, qul huwallahu ahad sharif 11 times, and conveys the reward to all the people resting in that graveyard. The hadith ki roshni mein, the reward what he is getting for 11 suratul ikhlas, because in light of the hadith 3 times if you recite one holy Quran, 3 feri paran se Quran jo sawab hai na, te 11 itre almost 4 Quran Sharif. So if you convey the reward of 4 Quran Sharif, awwal akhir darud Sharif, so almost 4 Quran Sharif you are conveying the reward to whom? All the people buried in that graveyard. If there are 1 lakh people buried, 4 Quran jo sawab lakh jane ki mirno, everyone will get reward of 4 Quran almost. And the reciter, how much will he get? 1 lakh and 1. No, 4 lakhs and 4. Because almost 4 Quran ja sawab mirinta lakh jane ke lakh 4 ke ne 4 lakh thiya, inja 4 ta 4 lakh ne 4 Quran pak ja sawab inke mirinta. And that was for 1 lakh people. If the graveyard contains 1 million people, ta 4 lakh thi gaya. हिन रीते अगर आई तमाम मुसलमान लेकर ने ईसा ले सवाब करना, बदें के सवाब मिलनो आंके उनसी वधी ने अल्लाह ताला सवाब अता करनो. This is the reason our ulama has advised us that whenever you do ईसा ले सवाब, या अल्लाह ये जो की भी हम पढ़ूं या whatever I have recited, you accept this and we convey the reward to your Habib sallallahu alaihi wasallam as a gift. We gift him and to all the souls of the prophets and to all the souls of the Sahaba, Ahle Bayt, Azwaj Mutahharat, Tabi'in, Taba Tabi'in, Awliya Kiram, Ulama, Ahle Sunnat, everyone. And finally, by their wasila towards my parents, my grandparents, my siblings, and towards all the believers. In this manner, if we do, inshallah, we will be rewarded in multiplication. Allah Ta'ala pabaden ke tawfiq rafiq ata kare, pabaden jo iman ke salamat rakhe, ne gauso khaja ji gulami mein rakhe, ne Allah Ta'ala maut ji temte gause azam jo didar nasib kare. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Maaf kar ja 15 minute ji galvi shayad 5-7 minute वधी हुई.